एनडीटीवी की संवाददाता ऋचा लखेड़ा ने अपने 10 साल के बॉलीवुड रिपोर्टिंग के एक्सपीरियंस पर एक किताब लिखी है, गार्बेज बीट। इस बुक को मुंबई में लॉन्च किया मशहूर अभिनेत्री करीना कपूर ने। I decided to come and launch Richa's book, and obviously I wish her all the best. I feel garbage is a word that's used, I don't know, you kind of say that, oh, what is she reporting? I don't know, could be garbage. But the fact that Richa's written the book, I think she's proud of what she does. मुंबई डेली की एसोसिएट एडिटर हो तुम। फिल्म स्टार्स की फ्रेंडशिप तुमसे नहीं, तुम्हारी पोजीशन से है। करीना कपूर का यह गुस्सा मीडिया के प्रति नजर आया था उनकी इसी साल रिलीज हुई फिल्म हीरोइन में। मगर रियल लाइफ में करीना भी रिस्पेक्ट करती हैं मीडिया का। कोई दुश्मनी नहीं है मीडिया से। हाँ, वो अलग बात है कि कभी-कभी कुछ गॉसिपी खबरों से उनका दिल दुखता है। Obviously, firstly, I'd like to congratulate Richa for such a wonderful topic, which, normally books are always about the stars. To know about somebody who's actually even makes the stars, because every star wants to be heard, everyone wants to give an interview, but nobody knows about the struggle that the interviewer actually goes through. So I'm really happy that you've come out with this book. The aggression, the drive, just the energy that all of you guys have, that, I need to get this answer and I'll do anything for it, backstage, front stage, parties, premieres. I mean, like standing out in the rain. I mean, it is a tough job that you all do as well. And sometimes we are a little harsh. दरअसल करीना कपूर ने मुंबई में रिलीज किया एनडीटीवी की एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट ऋचा लखेड़ा की एक किताब, जिसका नाम है गार्बेज बीट। ऋचा की यह किताब आधारित है एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट, स्टार्स और जर्नलिस्ट के रिश्ते, बॉलीवुड के गलियारों से खबरें निकालना और सितारों का पीछा करते हुए पत्रकारों की मेहनत पर। I am pretty happy in my skin of a entertainment reporter. I am very happy. I think that no other profession would be as encouraging, as tolerant, allows us to be as irreverent, as liberal as this profession. बतौर एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट जो कुछ देखा और महसूस किया इस बीट के बारे में, वो सब कुछ ऋचा ने लिखा गार्बेज बीट में और हौसला अफजाई की करीना कपूर ने। I feel garbage is a word that's used, I don't know, you kind of say that, oh, what is she reporting? I don't know, could be garbage. But the fact that Richa's written the book, I think she's proud of what she does. And she came across as that when we were even talking today. And I think that is the right beat. So I don't know if it's the garbage beat, but I know it's the right beat. This is also not about pointing fingers or being judgmental about anyone or sitting on the fence for someone else. It's just a perspective which I've tried to give, because I have felt over the number of years I've been doing this that we also bust our words trying to get our stories, but we need some of the credit too. भले ही जर्नलिस्ट और स्टार्स के बीच रिश्ते खट्टे मीठे हों, मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये एक सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। मुंबई से इकबाल परवेज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।